Good morning, students. From today, we are going to start our new chapter, and that is motion in a straight line. And this is quite easier one, as you have studied various topic related to this chapter in class 9 also. Okay, so let us start from introduction. The first is rest. आपको already पता है कि if we talk about rest position, it means the general conception is that you are laying at same position. Okay, but whenever we say scientifically the object is at rest, it means its position does not changes with respect to surroundings. An object is said to be at rest if its position does not changes with respect to surroundings with the passage of time. Surroundings में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट सो चूजन इज नॉन एज रेफरेंस पॉइंट. अगर उस रेफरेंस पॉइंट के साथ पोजीशन ऑब्जेक्ट की फिक्स रहती है देन इट इज कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट. फॉर एग्जांपल, ए बुक laying on table. So laying on table, so with respect to table, that book is laying and it is not changing its position, hence it is at rest. On the other side, you can define motion also. An object is said to be in motion if its position changes with respect to surroundings with the passage of time. So always whenever we define rest or motion, we choose surroundings as reference point because position is always considered with respect to a reference point and reference point can be chosen from surroundings. For example, a bus moving on road. So you are observing that bus is moving on the road, so the position of bus is changing with respect to you. Okay, so you are the one from surroundings. Okay, any object or point chosen to observe the change in position of object is called reference point. हमेशा रेस्ट या मोशन को डिफाइन करने के लिए पोजीशन में चेंज है या नहीं ये ऑब्जर्व करना कंपलसरी है और जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व करते हैं that point is known as reference point. So rest and motion are relative. No one is permanently at rest and no one is permanently at motion. One object at rest may be in motion with respect to another point. तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है लेकिन वही व्यक्ति या वही ऑब्जेक्ट दूसरे पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मोशन में भी पॉसिबल है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट में या एब्सोल्युटली मोशन में नहीं होता. द ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटिवली एट रेस्ट और रिलेटिवली इन मोशन. ओके, फॉर एग्जांपल, ए पैसेंजर सिटिंग इन ए बस इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर. तो एक पैसेंजर जो है अपने को पैसेंजर के कंपैरिजन में तो रेस्ट है बिकॉज को पैसेंजर के कंपैरिजन में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, बट ही इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स लेइंग आउटसाइड द बस. अगर आप बस के आउटसाइड में किसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो उसके कंपैरिजन में पैसेंजर क्या है, मोशन में है. द पैसेंजर इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू बस स्टैंड. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट. We know that every object has some dimensions, but when we study the motion of an object, we consider the object as a point. What is the concept of point object? The concept of point object means when dimensions of object are negligible with respect to distance traveled by it, then dimensions of object are not taken into consideration while studying motion. In that condition, object may be treated as point object. For example, अगर मैं एक बस की बात करता हूँ, suppose bus is 10 meter long. The bus is 10 meter long and it is traveling from one city to another city and the distance covered by the bus is 200 kilometer. So obviously the dimension of bus 10 meter is negligible in comparison to distance traveled by it 200 kilometer. So we can treat the bus as a point. बस की dimensions को हम include नहीं करेंगे. Okay, so bus may be treated as a point.
But if bus covers a 1 or 2 meter distance, then its dimensions cannot be neglected. In that case, bus cannot be treated as a point object. So bus may be treated as point object when it moves from one city to another city. Earth, the huge size Earth may be treated as point object for its motion around sun. तो सन के रेफरेंस में अर्थ को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ मोशन. द वेरी सिंपलेस्ट वन इज वन डायमेंशनल मोशन. One dimensional motion means if the position of an object changes in such a way that only one coordinate is required to describe its position, then such motion is called one dimensional motion. ऑब्जेक्ट इस टाइप से मूव करता है कि किसी भी मोमेंट पर आप अगर उसकी पोजीशन को बताना चाहते हैं, देन ओनली वन पोजीशन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड, आइदर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट. तो उस टाइप के मोशन को आप क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन. Now in case of one dimensional motion, object moves in a straight line. जब भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा तो उस केस में मोशन जो होगा वो वन डायमेंशनल मोशन होगा. फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स इनिशियल पोजीशन इज ए, फाइनल पोजीशन इज बी, सो इनिशियल कोऑर्डिनेट इज x1, फाइनल कोऑर्डिनेट इज x2. The examples are motion of freely falling object. The object is moving downward. Only y coordinate is required. Motion of bus on a straight road. It is again an example of one dimensional motion. Next is two dimensional motion. Now if an object moves in such a way that its position at any time is described by two position coordinates, then motion is called two dimensional motion. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप से मूव करता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए टू कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं, तो उस केस में आप इस मोशन को क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन. सो इन सच टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए प्लेन. कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन. फॉर एग्जांपल, initial position is A, object is moving in this surface, and final position is B. The position coordinates of A, they are x1 and y1, and position coordinates of B are x2 and y2. A person playing football in ground, it is not compulsory that he will run along a straight path. The ball may move in any direction. The motion of earth around sun, it is also in a plane. Okay, our motion in a plane, अर्थ पर हमारा जो मोशन है, that is two dimensional motion. Next is three dimensional motion. If an object moves in such a way that its position at any time is described by three position coordinates, then such motion is called motion in three dimension. अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, height is also changing, then such type of motion is known as three dimensional motion. और थ्री डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट हमेशा फ्री स्पेस में, एटमॉस्फेयर में मूव करता है. फॉर एग्जांपल, फ्लाइंग एरोप्लेन, फ्लाइंग इंसेक्ट्स, काइट फ्लाइंग इन ओपन स्काई. The initial position of object A, it is described by x coordinate, y coordinate and z coordinate. So it is x1, y1, z1. Final coordinates are x2, y2 and z2. Okay, so such motion is known as three-dimensional motion. Now again the simple one, the distance. So whenever object moves, obviously it will cover some length also. So the actual length of path covered by an object from initial point to final point is called distance. आप किस पाथ पर मूव कर रहे हैं, उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है, that is known as distance. Now suppose initial position is A, object has covered a length from A to B, then B to C, C to D and D to E. So final position is E. So actual length covered is AB, BC, CD and DE. This is distance.
Now, SI unit of distance is meter and it is a scalar quantity. Now, distance has magnitude only, no direction because it is a scalar quantity. Distance covered between 2 points depends on path followed. आप जैसा पाथ फॉलो करेंगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में अगर डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल हैं, तो जिस पाथ को आप फॉलो करेंगे उसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस होगी. पाथ में भी स्ट्रेट, पाथ में भी जिगजैग, तो उस केस में दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो सकती है. नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो. ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी डिस्टेंस जीरो की, अदरवाइज इट्स डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव. So distance is always path dependent. On the other side, if we talk about displacement, displacement is the shortest length of path. Actually, it is a straight path between initial and final position. But it has a certain direction also. What is its direction? In the direction from initial point to final point. This is called displacement. तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जो स्ट्रेट पाथ है, दैट स्ट्रेट पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली द शिफ्ट इन पोजीशन. ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट करता है, फाइनली कहां जाता है, तो उसकी पोजीशन में कितना शिफ्ट हुआ है, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स डायरेक्शन. So if we talk about the previous example, A, B, C, D, E. A is the initial point, E is the final point. So there is no need of intermediate positions B, C and D. So just draw a straight path from A to E, directed from A to E. A is the initial position, E is the final position. So AE is the displacement. Now it is a vector quantity. It has magnitude as well as direction, both. And what is its direction? Initial to final position. The SI unit of displacement is meter. Just like displacement, distance, displacement is also measured in meter. But displacement may be positive, negative or zero. Now, how can it be positive, negative or zero? When object moves in a particular direction, displacement may be positive. For example, if we talk about motion along x-axis, A is the initial position, B is the final position. So shift in position is from A to B. So obviously the shift in position is x2 minus x1, or this difference is positive. So displacement is positive. But if object moves in opposite direction, then displacement will be negative. For example, A is the initial position, so O to A position is x1, B is final position, object is moving from A to B, B is final position, so it is x2, so the shift in position is x2 minus x1, obviously this difference will be negative. And how can it be zero? So when object return to its initial position after covering a path, then displacement will be zero. For example, object has moved from A to B, then he is returning from B to A. So initial position is A, final position is also A, so the displacement is zero, because A to B displacement will be positive, B to A displacement will be negative, so overall displacement is zero. The important thing is the displacement between 2 points is path independent. Means displacement दो points के बीच में जो displacement है, that is completely unique and it cannot change on changing path. It is independent of choice of reference point of position. आपने displacement की calculation के लिए reference point किसे लिया है, it doesn't matter. अगर आप reference point को change कर देंगे तो positions change हो जाएंगी, but displacement will remain same. Displacement between 2 points is always smaller than or equal to distance traveled. अगर हम दो points के बीच में distance और displacement की बात करें, then displacement is always smaller than or equal to distance. ये understood है कि the displacement would be smaller than distance, but it will be equal to distance only in one case, when object moves along straight path, then distance will be equal to displacement.
Okay, so this is all about distance and displacement. So this was just the introductory lesson. In next class we will study about various type of speed, velocity, acceleration, uniform motion, non-uniform motion, and so on. Okay, so that's all for today. Have a good day.